But what I'm going to do, give him a warm welcome. His name is Avinash Agarwal. And you know what they say about Agarwals, right? Agarwal नहीं होता तो बिल्डिंग गिर जाती यार. Come on, all the best. नमस्कार। एयर इंडिया में आपका स्वागत है। आपका दिमाग खराब हो गया था कि बाकी सारे एयरलाइंस बंद हो गए थे? एयरक्राफ्ट के सामने और पीछे दो एयर होस्टेसेस बैठे हैं व्हील चेयर पर। फ्लाइट के दौरान आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कृपया उनके पास जाकर खुद ले लें। उन्हें तकलीफ मत दे, वो अडल्ट डायपर पहन के वैसे ही बहुत नाजुक स्थिति में है। अगर आप अपने बच्चे के साथ सफर कर रहे हो तो कृपया हमें सफर मत कराइए। अपने बच्चे को सीट बेल्ट बांधकर कस के बिठाइए और उसे चुप बिठाइए। अगर आपके बच्चे ने आवाज किया तो उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। आप लोगों को कॉन्डम पहनने में क्या शर्म आता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर आप कॉन्डम पहने होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं हूं आपकी फ्लाइट की मेट्रन गायत्री देवी। आप मुझे प्यार से गायत्री मौसी या बुआ कह सकते हैं। इस फ्लाइट के पायलट इरशाद चाचा अपना दवा दारू लेकर सो रहे हैं। उनके उठने की उम्मीद जल्द ही हम उम्मीद करते हैं उठ जाएंगे, तब हम टेक ऑफ करेंगे। टेक ऑफ से याद आया, टेक ऑफ तो कर रहे हैं लेकिन लैंडिंग का कोई गारंटी नहीं है। इस फ्लाइट का मॉडल इंजन 1935 का है, मेरे से 2 साल जवान है ये। हम सॉरी हम लैंड करेंगे न्यू दिल्ली में 6 घंटे बाद प्लान के मुताबिक, लेकिन नहीं हुआ तो अपनी अंतिम यात्रा के लिए एयर इंडिया चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We now have a minute of silence for all the Air India flights flying right now, also Kingfishers if they manage to take off. I love Air India. I think Air India is really cool. I love Air India so much. I actually got T-shirts with Air India. I love Air India printed on it. I wear it on Saturdays when I go for my social service. I campaign for jobs for elderly. So, anybody from Mumbai? All you Mumbai guys? Let's have a cheer. Mumbai, go Mumbai! Mumbai sucks. Shiv Sena. Mumbai is a shithole. Mumbai is like a gutter overflowing with people because they have nothing better to do than reproduce. Mumbai stinks so bad that when you go into the filthy public toilet and you come out, you're like, oh, I'm inside again. Mumbai is so crowded that 75 people in my office share one computer, one salary and one girlfriend. me. That's how low the standards are. But they say Mumbai is a dream city because people from all over the world come here to be actors, and you know where they end up? On TV. आज ही खरीदिए चमन बहार घुटने का तेल, इसके साथ आपका घुटना और दर्द दोनों गायब हो जाएगा। All their expressions in one scene. We have talented singers coming across from all over the country. Lucknow, Himachal. We know where they end up. Pune station, Titwala. Agla station, Titwala. Next station, Titwala. That's how I came into comedy. I mean, I came here as a stand-up comedian. When I went for my first show, I was all alone, so I thought I was the only guy. I was actually at Cool Chef Cafe. Nobody else had turned up. Akash, you know the place, Cool Chef Cafe? So anyway, I started doing comedy, and when we go home, all of us are sitting together, family, Indian style. I mean, not Indian style, Indian family style, we're sitting together, and they're like, hey, you're a comedian, tell us a joke. That's not how it works. Like, what if I was a doctor? You're confused. For example, you're a doctor, you like touching strange people and getting paid for it. What's your name? Karan. Dr. Karan? Oh, you're a gynecologist, and this must look very familiar. I like messing people up. So, the best part of my day is when I get these unwanted calls from the bank, personal loans. At that point, I tell them, good evening, I'm calling from Citibank, would you like a personal loan? Yes, I need 10,000 crores. I want to buy Sri Lanka. What do you mean, please be serious? You think Sri Lanka is a joke? Hey, that's just racist, man. Of course I know it's worth more than 10,000 crores. I'm going to negotiate. You think I'm an idiot? That's it from me. Thank you.